अस्सलाम वालेकुम। एडवांस्ड एल्गोरिदम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन के साथ डॉक्टर ज़फ़र आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज हमारा लेक्चर नंबर 36 होगा, जिसमें हम ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आज के लेक्चर को हम शुरू करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव ए रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए हमने 3 एल्गोरिदम डिज़ाइन किए थे। द फर्स्ट वन वाज द बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम, द सेकंड वन वाज फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ फॉर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स, एंड थर्ड वन वाज डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम। इससे पहले कि मैं आपको बेलमैन-फोर्ड और रेस्ट ऑफ द 2 एल्गोरिदम्स जो हैं उनका एक रिव्यू दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू make the statement of the single source shortest path problem once again. In case of single source shortest path problem, you are given a graph G, which is of course directed with source vertex S, and the weight function W is defined from set of edges to real numbers, and our objective is to find the shortest path from single source S to any of the vertices of the graph. This was the statement of the single source shortest path problem. इसके लिए हमने 3 जो एल्गोरिदम्स डिज़ाइन किए थे। द फर्स्ट वन वाज बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम। इन केस ऑफ बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम, द ग्राफ may contain negative weight cycles, or it may contain the negative edges as well, of course. So that means the statement of the Bellman-Ford algorithm will become: the graph is directed, it may contain negative edges, it may contain negative weight cycles as well, and our objective is to find the shortest path from the source vertex S to any of the vertices of the graph. This was the Bellman-Ford algorithm. In case of Bellman-Ford algorithm, the algorithm was in fact, first of all we initialize the graph. As you remember, इनिशियलाइजेशन के मानी आप जानते हैं कि हम इनिशियली हर वर्टेक्स को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं dv, यानी कि dv is infinity for every v belongs to vg. And similarly, we define the predecessor of the each vertex v belong to vg, and initially the predecessor of the each vertex is nil. And initially, because we are given the source vertex as well, so ds is equal to 0. और आपको याद होगा कि इनफैक्ट हमने इस d फंक्शन को कहा हुआ है कि एट द टर्मिनेशन ऑफ द एल्गोरिदम, कोई भी एल्गोरिदम हो, वो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम हो या डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम हो, at the end of the day, in fact, this algorithm return the value of the shortest path from source vertex S to the vertex V. So in case of Bellman-Ford algorithm, we designed the algorithm, first of all initialize the graph, and then we made in the main loop, we took the value of I from 1 to v minus 1, and then for each iteration we relaxed all the edges of the graph. So after relaxing all the edges of the graph, we believe that if there is no negative weight cycle in the graph, then the algorithm will return the true value 2. That means there exists the shortest path value for each vertex, and also the algorithm return the value dv for each vertex v belongs to g. That means in fact this is the shortest path from the source vertex S to the vertex V. तो लिहाजा बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम को मैं समराइज यूं करूंगा कि अगर बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम में कोई साइकिल कंटेंट है तो एल्गोरिथम विल रिटर्न द वैल्यू फॉल्स, अदरवाइज इट विल रिटर्न द वैल्यू ट्रू, and it will not return the only value true, but it will also compute the shortest path from source vertex S to any of the vertex V. To know whether there exists any negative weight cycle or not, इसके लिए हमने dv को कंपेयर किया था. If dv was greater than du plus weight of uv for all uv belongs to all the any the set edge set, then in this case we believe that there is a negative weight cycle, and of course हमने इसका proof भी दिया था कि if this condition is satisfied there must be a negative weight cycle, and if this condition is not satisfied then the shortest path is well defined. And we also gave the proof of correctness of this algorithm as well. In the proof of correctness जो है वो हमने in fact दिया था at the number of iterations, यानी कि for I is equal to 1 in the main loop, first of all we proved that all the edges which are adjacent to the source vertex, those are relaxed, and the shortest path for any vertex v which is adjacent to the source vertex, for which for this the dv is equal to delta sv. And similarly for the iteration 2, all the edges which are at a distance of
two number of edges from the source vertex S, those will be relaxed, and of course at the final termination of this loop all the edges of the graph will be relaxed, जिसके माने ये हो गए कि after v minus 1 number of iterations all the edges of graph will be relaxed. in fact ये हमें पहले ही पता है, अगर आपके पास number of vertices v हैं तो any path p which is let us suppose a shortest path in between any two vertices, it cannot contain the total number of edges more than v minus 1. तो यही रीज़न है कि जब आप मेन लूप को i equal to 1 to v minus 1 टाइम्स उसको रन करेंगे तो at the termination of this algorithm for each value of v belongs to the vertex set v, the dv will give you the shortest path from the source vertex s to the v. This was the reasoning. Based on this reasoning, in fact, we give the proof of this algorithm. Our second one algorithm was finding shortest paths for directed acyclic graphs. As you know, in case of directed acyclic graphs, there are no cycles in the graph, and if the graph is acyclic, we have already designed algorithm जिसको हमने topological sorting कहा था, in which we can make the sorting of the vertices of the graph. यानी कि topological sorting में हमने ये कहा था कि if there is an edge uv in the graph G, then after topological sorting the vertex u will come first as compared to the vertex v. क्योंकि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में हमारे पास ऑर्डर एक एग्जिस्ट करता है, सो दैट्स वाई वी गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सॉर्टिंग ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, एंड फर्स्ट वी मेड द टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, and then of course we initialize the graph, and then we choose the vertices which are in the sorted order, of course the topological sorted order, and based on those vertices we relaxed all the edges which are adjacent to these vertices. So in this way we finally computed the values of all the vertices v for which dv was equal to delta sv, यानी कि dv की जो फाइनल वैल्यू थी that was the shortest path from s to v. इस एल्गोरिथम का जो प्रूफ ऑफ करेक्टनेस है वो हमने इस रीजनिंग यानी कि उसकी रीजनिंग ये थी, उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि व्हेन द वर्टिसेस आर सॉर्टेड एंड देयर इज ए शॉर्टेस्ट पाथ p फ्रॉम v0 v1 v2 अप टू v, then for each edge v0 v, when this edge will be relaxed, the dv value will be delta sv, because in fact you have relaxed this edge. Once you have relaxed the edge v1 v2 for example, then of course these values of v1 and v2 यानी कि dv1 and dv2 will not change, and finally the values of the function d will be in fact the values of the shortest path from the source vertex s to any of the vertex v of the graph. Our third one algorithm was Dijkstra algorithm. We supposed that in Dijkstra algorithm the negative weight edges are not allowed. Dijkstra algorithm में जो हमने approach use की थी for finding shortest path from source s to any of the vertex v, वो ये थी कि इनिशियली हमने set of all vertices को दो सेट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि उसकी हमने पार्टीशनिंग कर दी. एक को हमने सेट एस कहा, दूसरे को हमने v माइनस एस कहा. आपको याद होगा कि सेट एस को हमने एक क्लाउड ऑफ वर्टिसेस भी कहा था. एंड देन वी चूज ए वर्टेक्स फ्रॉम द v माइनस एस यानी कि आउट ऑफ क्लाउड, एंड वी पुट इनटू द वर्टेक्स एट एस. ऑफ कोर्स वो जो हम वर्टेक्स चूज करते हैं वो यकीनन हम ऐसा वर्टेक्स चूज करते हैं जिसका ऑलरेडी हमने शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कंप्यूट कर रखा है. तो इनिशियली आपके पास जो क्लाउड ऑफ वर्टिसेस है दैट वाज एम्प्टी, और v माइनस एस ऑफ कोर्स आपके पास इनिशियली v था. जब आपने इसको इम्प्लीमेंट किया तो v माइनस एस को आपने एल्गोरिथम में मिन प्रायोरिटी क्यू इनफैक्ट कहा था. यही वजह थी कि जब मिन प्रायोरिटी क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाता है उस वक्त आपको all the vertices from the v minus s are added to the set s, and it is assured that the shortest path for each vertex is computed. इसके लिए पहली बात तो ये है कि हमारे पास इनिशियली चूंकि set s is empty, and first when we choose the vertex out of cloud, वो हम चूंकि source vertex हमने चूज किया था, क्योंकि source vertex का हमने shortest path ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, उसको हमने s में डाल दिया, और फिर जितने भी एजेस एस से लीव कर रहे थे टूवर्ड्स द आउट ऑफ क्लाउड यानी कि v माइनस एस, उनको हमने रिलैक्स कर दिया. तो आफ्टर रिलैक्सिंग ऑल दोज एजेस, उसमें से फिर हमने मिनिमम वेट यानी कि लाइट वेट एज को चूज किया, और उसके एंड पॉइंट को जो कि इनफैक्ट v माइनस एस को बिलोंग करता था, उसको हमने अगेन सेट एस में ऐड कर दिया.
and we continued this process till we get the shortest path for every vertex V from the source vertex S. This was the approach in fact we used in the Dijkstra algorithm. इसका जो प्रूफ ऑफ करेक्टनेस है उसमें भी हमने जो मेन लॉजिक थी वो यही यूज़ की थी कि व्हेन देयर इज ए पार्टीशनिंग ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम सेट S to V minus S, then we selected the end point of the edge with minimum weight from the set V minus S. So after selecting that vertex we added into the set S, and then we relaxed all the edges which are leaving from that set, यानी कि from that vertex to the set V minus S. So this was the reasoning. Based on this we proved the correctness of the Dijkstra algorithm. So in fact I have made the review of all those three algorithms: single source shortest path problems. Our today problem is all pair shortest path problem. Of course we will discuss this problem, all pair shortest path problem, based on the single source shortest path problems. जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ये भी कहा था कि if you are able to find the algorithm for a single source shortest path problem, then this algorithm can be reused for designing algorithm for the all pair shortest path problems. So now let us discuss about the all pair shortest path problems. All pair shortest path problems को मैंने last lecture में भी define किया था कि in case of all pair shortest path problems we are given a pair of vertices UV, and our objective is to find the shortest path from vertex U to vertex V for any of such pair of vertices. In case of single source we are given the source and we have to find the shortest path from source to every of the vertex, but in case of all pair shortest path problems we have to find the shortest path from any vertex V to any vertex U, and of course any vertex U to any vertex V. अब ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग द एफिशिएंट एल्गोरिथम्स, आइए देखते हैं स्लाइड. ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ problems. In all pair shortest path problems, graph G is given as a directed weighted with weight function W from E to R, where W is a function from edge set to a real valued weights. Our objective is to find shortest paths for all pair of vertices UV belongs to V. All pair shortest path problems can be solved by running single source shortest path in order V times by taking each vertex as a source vertex. Now of course there are two cases. The first one is edges are non-negative in the graph. In that case then we can use the Dijkstra algorithm. Linear array of a main priority queue takes order V cube. Binary main heap of main priority queue will take order VE into log V, and implementation of main priority queue as a Fibonacci heap will take the time order V square log V plus VE. On the other hand, if the negative weight edges are allowed, then Bell-Manford algorithm can be used when negative weights are present. In this case, the running time is of order V square into E. However, if the graph is dense, then running time is of order V4. Unlike single source shortest path algorithm, most algorithms of all pair shortest path problems use an adjacency matrix representation, which will be defined in the next slide. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने इनिशियली ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स को इस तरह से डिफाइन किया कि फॉर एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस UV व्हेन द ग्राफ इज डायरेक्टेड and weight function is also defined from the edge set to real numbers, our objective is to find the shortest path from vertex U to vertex V for each such combinations. इसके लिए हमने यहाँ पे दो अप्रोचेस डिस्कस की हैं. पहली अप्रोच तो ये है कि आपने सपोज किया कि देयर आर नो नेगेटिव वेट एजेस. इफ देयर आर नो नेगेटिव वेट एजेस, देन वन ऑफ द अप्रोचेस, then we can select any of the vertex V from the graph and run the Dijkstra algorithm over this vertex, and of course the weight of the edges are also given, and finally we will be able to find the shortest path from this vertex, particular vertex V to any of the vertices of the graph. And similarly, when we will run the Dijkstra algorithm for all the vertices of the graph, considering each vertex has a source vertex, it will give us the shortest path in between any of the two pair of vertices. This was the one of the approach. Now, of course, as you remember that the Dijkstra algorithm, when it is used for the single source shortest path problem,
then we used a data structure's min priority queue. And we also observed at that time, not only observed, but in fact we computed the time complexity of this algorithm, the computational complexity of this algorithm, that if the min priority queue is implemented as a linear array, then the total computational time was of order v square. And when the min priority queue is implemented as a binary main heap, the total computational cost in all pair shortest path problem will become VE into log of V. And the third one case, when we implement the min priority queue as the Fibonacci heap, the total computational cost will become of order V square into log of V. So these were these three different implementations of the min priority queue when we are going to use Dijkstra algorithm for finding all pair shortest path problems. But of course, you know that the Dijkstra algorithm can only be used when the weights of the edges are non-negative. If on the other hand, the edges are non-negative, then we can use the Bellman-Ford algorithm. And you know that the computational cost of Bellman-Ford algorithm as for single source is of order V into E, because we have to use the Bellman-Ford algorithm for each of the vertex of the graph. So that's why the total computational cost of the Bellman-Ford algorithm, when this will be used for the all pair shortest path problem, it will become of order V square into E. One thing more which I have added here is that in the single source shortest path problem, we use the adjacency lists for the representation of the graph, but in the all pair shortest path problem, we will be using the adjacency matrix for the representation of the graph. How we can define the adjacency matrix representation for a given graph? आइए देखते हैं slide को. Adjacency matrix representation is the vertices are numbered from 1, 2, 3 up to cardinality of V. In this way, input is an n cross n matrix. W represents edges, weights of n vertex directed weighted graph G, that is W is equal to Wij, and Wij is equal to 0 if I is equal to j. Wij is equal to the weighted directed graph Ij if I is not equal to j and Ij belongs to the edge set E, and Wij is equal to infinity if I is not equal to j and the edge Ij also does not belong to E. This is the representation of the graph using adjacency matrix. Now we have defined the weighted matrix capital W as Wij. Wij is equal to 0 if I is equal to j, and again there are two cases when I is not equal to j. We have two cases. The one case is the edge Ij belong to edge set, or the edge Ij does not belong to edge set. If I is not equal to j and the edge Ij belong to edge set, in that case Wij is equal to weight of the edge Ij. On the other hand, if I is not equal to j, यानी कि अगर I और j distinct हैं and the edge Ij is not an edge in the graph, then of course we have defined Wij equal to infinity. So these are the three definitions of Wij, यानी कि Wij is equal to 0 if I is equal to j, and Wij is equal to weight of the edge in case I and j are distinct and the edge Ij belongs to the graph. And if I and j are distinct and the edge Ij does not belong to the graph, in that case Wij is equal to infinity. क्योंकि हमारे पास I और j की values from 1, 2, 3 up to n हैं, so that's why this matrix will become of order n cross n, and every entry of this matrix is defined. Now shortest path and solution representation. For a moment we assume that negative edges are allowed, but input graph contains no negative weight cycle. The tabular output of all pair shortest paths algorithm will be presented as n cross n matrix, which is capital D, जो कि यहाँ पे मैंने Dij, where I is of course 1 to n and j is of course from 1 to n, where entry Dij contains the weight of the shortest path from vertex I to vertex j, and the predecessor matrix pi is equal to pi ij, where pi ij is equal to nil if either I is equal to j or there is no path from I to j, and pi ij is predecessor of vertex j on some shortest path from I to j otherwise. Now this was the slide to show how to in fact represent the output of the graph. क्योंकि output of the graph में आप all pair shortest path problem को solve करने जा रहे हैं, जिसके माने ये है कि you want to find the shortest path from every vertex vi to every vertex vj. इसके माने ये हो गए कि there must be n into n number of shortest paths for this problem. It means there are n square entries.
So for the storage of these entries, we have made the use of the matrices. तो लिहाजा आपके पास आउटपुट में जो शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स होगा, यू मे कॉल इट कैपिटल डी, जो कि एंट्रीज उसकी होंगी डी आई जे, वेयर डी आई जे रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स वी आई टू वर्टेक्स वी जे. Similarly, as we have made the use of shortest path matrix, similarly we can make the use of predecessor matrix, because when we are going to find the shortest path in between n two vertices of the graph, similarly we have to compute or we have to give the solution of that shortest path as well. जिसके लिए आपको याद होगा कि हम उसके लिए सिंगल सोर्स में हमने predecessor subgraph डिफाइन किया था, but here we have defined the predecessor matrix. The predecessor matrix is also of order n cross n, जिसकी any entry pi I j is equal to nil if I is equal to j or there is no path from vertex I to vertex j, and pi I j is equal to predecessor of the vertex j if there is some shortest path from vertex vi to vertex vj. पहले तो मैंने predecessor matrix define किया, but now let us define the predecessor subgraph. The predecessor subgraph G for I is defined as G pi I is equal to V pi I, E pi I, where V pi I is equal to J belongs to V such that pi ij is not equal to nil. Union the set consisting of single vertex I. And similarly E pi I is equal to ij, where J belongs to V pi I minus I. G pi I is shortest path tree as was in single source shortest path problem. पहले हमने predecessor matrix define किया था. Now we have defined the predecessor subgraph for each row. इसको हमने denote किया है as G pi I. G pi I is equal to V pi I, E pi I, where V pi I is set of vertices of this graph and G pi I is set of edges for this predecessor subgraph. V pi I is equal to all the vertices J belongs to V for which pi ij is not nil, यूनियन द वर्टेक्स आई, क्योंकि वर्टेक्स आई का प्रीडिसेसर नहीं होता इसलिए हमने इसको सेपरेटली यहाँ पे ऐड कर दिया है. एंड सिमिलरली ई पाई आई इज इक्वल टू आई जे, वेयर जे बिलोंग्स टू वी पाई आई माइनस आई, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सोर्स वर्टेक्स का प्रीडिसेसर नहीं होता, दैट्स वाई हमने यहाँ पे जे को माइनस कर दिया फ्रॉम द वी पाई आई. यानी कि जब हमने जे को डिफाइन किया तो इनफैक्ट हमने वी पाई आई माइनस आई पे जे को डिफाइन कर दिया. So this was the definition of our predecessor subgraph, which will be used finding the optimal solution for the shortest path problem. Now here you can see how to print the output of the predecessor subgraph. The algorithm name is print all pairs shortest paths. The input is predecessor matrix and then the vertex I and vertex j. If I is equal to j, then print I, else pi ij is equal to nil, then print no path from vertex I to vertex j exist, else print all pairs shortest path. Of course इस केस में आपके पास जो input है that is predecessor matrix pi and then comma I and then pi I j and finally print j. यानी कि यहाँ पे जो मैंने एक आपको एल्गोरिथम डिफाइन करके दिया है उसमें हमारे पास तीन इनपुट्स हैं, the vertex I, the vertex j and the predecessor matrix. And our objective is to print the set of all the edges or set of all the vertices which construct the path from, यानी कि shortest path from vertex I to vertex j. इस केस में हमने चेक किया if I is equal to j then print I. इसके माने ये हैं कि इनफैक्ट आपके पास सिर्फ एक ही सिंगल नोड है in this tree, so that's why you will be left only with the one vertex I. So it means if I is equal to j then print I. If else you check, if we checked if pi ij is equal to nil, it means there does not exist any of the shortest path from vertex vi to vertex j. And else we again made the recursive call to the same algorithm with the input as a of course matrix pi and the starting vertex vi जिसको हमने यहाँ पे i कहा हुआ है, and then we have replaced the value of j as pi ij, यानी कि predecessor of the vertex j, and finally we printed the vertex j. In this recursive call, of course, सबसे पहले जो है आपका vertex I will be printed, and then I plus 1 and so on, and finally the vertex j will be printed. So it will give you the shortest path from vertex vi to vertex vj, of course, in which for each vertex j you were given the predecessor of the vertex j. This was a set of definitions and notations for solving all pair shortest path problem.
अब हम आए चलते हैं अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ, जिसमें हम एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे विच इज़ सिमिलर टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, shortest paths and matrix multiplication. Here we present a dynamic programming algorithm for all pairs shortest paths on a directed graph G is equal to VE. Each major loop of dynamic programming will invoke an operation very similar to multiplication of two matrices, and algorithm look like repeated matrix multiplication. At first, we will develop order 4 time algorithm and then improve its running time to order V cube into log of V. Before we go for dynamic solution, let us have a review of steps involved in dynamic programming algorithms. The first one is characterize the structure of optimal solution. The second one is recursively define value of optimal solution, and then computing value of optimal solution in bottom-up fashion, and finally constructing optimal solution for computed information. Note step 1 to 3 are for optimal value, while step 4 is for computing optimal solution. यहाँ पे आपने देखा कि हमने बात की कि एट दिस लेवल, यानी कि जिसको मैंने कहा है कि वी विल डिज़ाइन एल्गोरिथम विच लुक लाइक्स सिमिलर टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको हम यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्व करेंगे. एंड इनिशियली वी विल नॉट टेक केयर ऑफ एफिशिएंसी. आवर फर्स्ट वन एल्गोरिथम विल बी ऑफ ऑर्डर V4, यानी कि इसकी जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 4, एंड देन वी विल improve its efficiency, and finally its computational cost will become of order V cube into log of V. क्योंकि मैंने यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग का जिक्र किया, जैसा कि आपको पता है कि दिस प्रॉब्लम इज ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग. That's why first of all I would like to give a review of the steps involved in dynamic programming. In case of dynamic programming, as you remember that first of all we have to characterize the optimal substructure of the problem, and then we have to compute the optimal solution, then recursively define the value of optimal solution, and at the third step we compute the optimal value, and at the fourth step we compute the optimal solution. As you remember that the step 1 to 3 are for the optimal value, and the step 4 is only used when we require the optimal solution as well. Now in constructing our first algorithm, first of all we are going to construct the first one step, which we call the structure of optimal solution. Consider a shortest path P from vertex Vi to j, and suppose that P contains at most m edges. If I is equal to j, then P has weight 0 and no edges. If I and j are distinct, then decompose path P into I to k, a path P dash, and then an edge from k to j, where path P dash contains at most m minus 1 edges, and it is a shortest path from vertex I to vertex k. And hence shortest path from I to j consisting of at most m edges is equal to shortest path from I to k consisting of at most m minus 1 edges plus wkj. This becomes the structure of this optimal solution. As you have seen in the structure of optimal solution, we have supposed that let P be a shortest path from vertex Vi to vertex Vj consisting at most m edges, and then we decomposed this path P into two components. Of course इस केस में अगर आपके पास I is equal to j होगा तो weight of this path will be 0. If I is equal to not j, then we can decompose path P into two components. First one component को हमने कहा कि if I is not equal to j, then there must exist at least one edge, at least one vertex k, such that P can be decomposed into a path from I to k and an edge from k to j. Of course इस केस में आपके पास k की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है इन बिटवीन 1 2 3 अप टू n. आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि if P is a shortest path in between two vertices Vi and Vj, and let P dash be any subpath of this path, then P dash must be shortest path as well. यही अप्रोच हमने यहाँ पे भी यूज़ की. अगर P आपके पास shortest path है और उसको आपने डिकम्पोज किया है into a path P dash and an edge, then of course this subpath P dash must be shortest path as well. So in this way our optimal structure has become delta ij is equal to delta ik plus wkj, where of course delta ij is shortest path from vertex I to vertex j, जिसको हमने path P कहा है, and delta ik is shortest path from vertex Vi to vertex Vk consisting of at most m minus 1 edges, and then we have an edge with weight wkj.
In the recursive solution, let us denote Lij power m is equal to minimum weight of path I to j at most m edges. If m is equal to 0, there is a shortest path I to j with no edges, if and only if I is equal to j. Thus, Lij 0 is equal to 0 if I is equal to j, and Lij 0 is equal to infinity if I is not equal to j. Similarly, if m is greater than or equal to 1, compute using Lij m minus 1 and adjust the matrix W. In this case, Lij power m will become minimum of Lij m minus 1, comma minimum of Lik m minus 1 plus Wkj, where k is in between 1 and n. And this will become minimum of Lik power m minus 1 plus Wkj, where k is in between 1 to n. And this is because we know that Wij is equal to 0 if I is equal to j. The actual shortest path weights are therefore given by delta ij is equal to Lij n minus 1, Lij n, Lij n plus 1, and so on. So here, as you have seen, we are going to construct the optimal solution. Yani ke before optimal solution, we are going to construct the optimal value. For this purpose, हमने एक यहाँ पे notation define की है Lij power m. इससे पहली स्लाइड में जब मैं ऑप्टिमल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने जा रहा था, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि लेट P बी ए शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स Vi टू वर्टेक्स Vj या वर्टेक्स I टू वर्टेक्स J विद एट मोस्ट m एजेस. तो इसी बात को, यानी कि यही जो इनफैक्ट पाथ था, उसकी जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे Lij m कह दिया. Now there are two cases. First one is m is equal to 0 and the second case is m is greater than or equal to 1. For m is equal to 0, Lij m is equal to 0 if I is equal to j, and Lij m is equal to infinity if I is not equal to j. And in case of when m is greater than or equal to 1, Lij m is equal to minimum of Lik power m minus 1 plus weight of the edge from k to j. This has become our recursive mathematical model. One thing more I have mentioned over here, that when you have computed Lij power n minus 1, this should be equal to Lij power n, this should be equal to Lij power n plus 1, and so on. The reason is very simple, as you know that there are n number of vertices in this graph. So of course, any path from any vertex I to vertex j cannot contain more than the n minus 1 number of edges. So this is the reason that Lij power n minus 1 is in fact the shortest path from vertex I to vertex j whose at most number of edges are n minus 1. This should be equal to Lij power n, जिसके मान ये हो जाएंगे कि shortest path from vertex I to vertex j, जिसके total number of, यानी कि at most number of edges जो हैं वो n है, and of course it should be equal to Lij power n plus 1 whose total number of edges in between this path from I to j are n plus 1, and so on. So this is the reason कि यहाँ पे मैंने कहा कि Lij power n minus 1 is equal to Lij power n plus 1 is equal to Lij power n plus 2, and so on. Now finally, the computing the shortest path weights using the bottom up approach. Input matrix is W, which is equal to Wij, जो weighted आपका matrix है. Suppose that Lm is equal to Lij power m, where m is 1 2 3 up to n minus 1. Compute series of matrices L power 1, L power 2 up to L power n minus 1. Objective function L power n minus 1 at most n minus 1 edges in each path. Note that Lij power 1 is equal to Wij for all ij belongs to V, and so L power 1 is equal to W. Heart of this algorithm is given matrix L power m minus 1 and W, and compute the matrix L power m. That is, it extends shortest paths computed so far by one more h. इस स्लाइड पे इनफैक्ट मैंने आपको फाइनल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो यहाँ पे कंप्यूट करने का तरीका सिखाने की कोशिश की है. पहले हमारी जो इनिशियल सब स्ट्रक्चर थी उसमें हमने ये देखा था कि डेल्टा आई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई के प्लस वेट ऑफ द एज फ्रॉम वर्टेक्स के टू वर्टेक्स जे. जब हमने उसका रिकर्सिवली ऑप्टिमल सोल्यूशन यानी कंप्यूट किया, उसमें हमने देखा कि हमारे पास फाइनली एल आई जे पावर एम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल आई के पावर एम माइनस 1 प्लस वेट ऑफ द एज फ्रॉम वर्टेक्स के टू जे वो आ गया. इसकी बेस केस यानी कि इसकी इनिशियल कंडीशंस भी हमने डिफाइन कर ली, हमारे पास रिकर्सिव मैथमेटिकल मॉडल भी आ गया. अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इनफैक्ट वी वांट टू आइडेंटिफाई दैट वन, क्योंकि हमने ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है फॉर एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस, एंड दिस इज नो दैट एनी ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन
the vertex I to j cannot contain more than n minus 1 number of edges. So that's why our solution in this case will be Lij power n minus 1. तो लिहाजा हमारे पास Lij where I is running from 1 to n and j is running from 1 to n and power of this entry is n minus 1 जिसके मान ये है कि there must be at most n minus 1 number of edges. So all these entries I have computed so far. I put into the matrix और उसको मैंने एक कैपिटल L कह दिया. तो लिहाजा मेरे पास कैपिटल L is equal to Lij m where m is running from 1 to 3 up to n minus 1 and the variation of I is from 1 to n and of course variation is of j is of course between 1 to n. So finally the objective function of this problem has become L power n minus 1. L जो है यहाँ पे मैं कैपिटल L कह रहा हूँ यानी कि कैपिटल L पावर n माइनस 1 के माने ये हैं कि दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n और इसकी ईच एंट्री इज स्मॉल Lij पावर n माइनस 1 वेयर स्मॉल Lij की जो डेफिनेशन है वो मैंने ऑलरेडी रिकर्सिवली आपको दे दी है और उसकी बेस कंडीशंस जो हैं जहाँ पे आपका एल्गोरिथम टर्मिनेट होगा वो भी मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन करके दे दिया है. बेस्ड ऑन दीज डेफिनेशंस now of course we are able to design the algorithm. इसके एल्गोरिथम को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल we will take input as a matrix Lm minus 1 and the weighted matrix capital W and we will compute the matrix Lm and after computing the Lm then we recursively define L power 1, L power 2, L power 3 and so on. So our first one algorithm let us see at the slide. Name of the algorithm is extend shortest paths. The input is capital L and W. Capital L जो है इसको मैंने L m minus 1 कहा है और आउटपुट जो है उसको मैंने L dash यानी कि L power m को मैंने L dash कहा है. Now initially of course you can find the number of rows in this matrix. N is equal to rows of the matrix L. Initially मैंने L dash एक matrix जो है उसको यहाँ पे initialize कर लिया where the elements of this L dash are Lij where I is of course in between 1 and n and j is of course in between 1 and n. That means this L dash matrix is of order n cross n. Now for I equal 1 to n and for j equal 1 to n Lij is initially infinity. Then for k equal 1 to n Lij dash is equal to minimum of Lij dash comma Lik plus weight of the edge from k to j and finally you will be returned with the L dash. In this algorithm as you can see the input of this algorithm is a matrix L and another matrix W. Matrix W जो है उसका as you know this is the matrix of the weighted graph and initially we have initialized a matrix जो हम यहाँ से compute करने जा रहे हैं. Our objective is here to compute the matrix Lm based on the matrix Lm minus 1 and W. जो मैट्रिक्स Lm हमने कंप्यूट करना था उसके लिए यहाँ पे जो मैंने नोटेशन यूज़ की है दैट इज़ L डैश. L डैश की जो एंट्रीज हैं उनको मैंने करस्पॉन्डिंगली L स्मॉल Lij डैश कह दिया है. ऑफ कोर्स ये n बाई n का एक मैट्रिक्स है. इसको मैंने इनिशियली इनिशियलाइज किया फॉर ईच Lij डैश इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्योंकि हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने जा रहे हैं. सो दैट्स वाई ईच ऑफ द एंट्री Lij डैश इनिशियली मस्ट बी इन्फिनिटी. देन फॉर k इक्वल 1 2 3 अप टू n हमने Lij डैश को इस तरह से कंप्यूट किया कि दिस मस्ट बी मिनिमम ऑफ Lij डैश जो हमने पहले कंप्यूट कर रखा है एंड देन Lik प्लस Wkj एंड ऑफ कोर्स इस केस में आपके पास k की वैल्यूज 1 2 3 अप टू n है. यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ k फॉर विच you will compute the minimum value of Lij dash. This when you will compute the minimum value Lij dash for each of the value of I and j, of course it will be become a matrix of order n cross n जिसको हमने finally Lm कहा है. तो लिहाजा आपके पास एक मैट्रिक्स L पावर m minus 1 गिवन था, दूसरा आपके पास वेटेड मैट्रिक्स W था and based on these two matrices we have computed the matrix Lm. But in fact this is not the final. We have to in fact compute L power n minus 1. To compute L power n minus 1, first of all we have to compute L power n minus 2. To compute L power n minus 2, we have to compute L power n minus 3 and so on. So for this purpose, first of all we should compute or we should know L power 1 and then L power 2 and so on. So that's why this algorithm is not sufficient, because this algorithm takes input as Lm minus 1 and W and compute L power n. But how to compute L power m minus 1 and L power m minus 2 and so on, that is the problem in the next slide.
फिर स्लो ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ्स, यहाँ पे हमने इनपुट कैपिटल W लिया, n इज इक्वल टू रो ऑफ द मैट्रिक्स W एंड देन इनिशियलाइज्ड L1 इज इक्वल टू W। फॉर m इज इक्वल टू 2 to n-1 हमने LM को कह दिया एक्सटेंड शॉर्टेस्ट पाथ्स फ्रॉम LM-1 टू W एंड रिटर्न L पावर n-1। यहाँ पे आपने देखा कि इनिशियलाइज हमने कर लिया है L पावर 1 को W से, क्योंकि L पावर 1 क्या चीज़ है, इनफैक्ट इसकी जो एंट्रीज हैं दोज आर Lij पावर 1, जिसके माने ये हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स I टू वर्टेक्स J हुज नंबर ऑफ एजेस आर एट मोस्ट 1। ऑफ कोर्स अगर किसी भी पाथ में आपके पास जो नंबर ऑफ एजेस हैं एट मोस्ट वो 1 होंगे, तो इनफैक्ट ये डायरेक्टली आपके पास एजेस होंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पे L पावर 1 इज इनफैक्ट द वेटेड ग्राफ, जिसको हमने कैपिटल W कहा है। तो लिहाजा L1 इज इक्वल टू कैपिटल W, और आपको इस ग्राफ के लिए यानी कि इस एल्गोरिथम के लिए आपको L की कोई इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल W इज सफिशेंट, क्योंकि L1 इज इक्वल टू W। तो फॉर m इज इक्वल टू 2 to n-1 हमने L जो LM की वैल्यू है वो हमने वही एल्गोरिथम जो पहले हमने यूज़ किया था उसको हमने रिकर्सिवली कॉल कर लिया, and finally we computed the value of m where m is 2 3 up to n-1. Of course this algorithm finally will return the value L power n-1, which was your required objective. In this slide you can see I have given the matrix multiplication algorithm. We are given two matrices A and B. इसकी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपके पास रो ऑफ ए उसको मैंने n कह दिया, C को मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, यानी कि C वो मैट्रिक्स है जिसमें मैं A और B को मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट स्टोर करना चाहता हूँ। नाउ फॉर I इक्वल 1 to n एंड j इक्वल 1 to n, Cij इनिशियली मैंने 0 डिफाइन कर लिया, एंड फॉर k इक्वल 1 to n Cij इज इक्वल टू Cij प्लस Aik इंटू Bkj। इफ़ यू कंपेयर दिस एल्गोरिथम जिसमें मैंने टू मैट्रिसेस A और B लिए हैं और उनका प्रोडक्ट आपको कंप्यूट करके दिया है, दिस एल्गोरिथम इज़ वेरी सिमिलर टू द एल्गोरिथम विच आई डिजाइंड फर्स्ट, जिसमें मैंने कहा था कि वी आर गिवन इनपुट Lm-1 एंड द मैट्रिक्स W एंड वी कंप्यूटेड द मैट्रिक्स L पावर m। अगर हम इन दोनों एल्गोरिथम्स को इस तरह से कंपेयर करें कि मैं उस मैट्रिक्स में कैपिटल L को यहाँ पे A कह दूँ, W को B कह दूँ और L डैश को C कह दूँ, और सिमिलरली ऑपरेटर्स को मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ कि वहाँ पे मिनिमम ऑपरेटर को यहाँ मैं प्लस कह देता हूँ और वहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर था उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कह देता हूँ। तो इन दिस केस बोथ ऑफ द एल्गोरिथम्स विल बिकम सिमिलर। चूँकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अगर आपको कोई दो गिवन मैट्रिसेस दिए हों उनकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर n क्यूब है, तो दैट्स वाई उस केस में भी हमारी जो टोटल कंप्यूटेशनल कॉस्ट होगी दैट विल बी ऑफ ऑर्डर n क्यूब। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने n को सपोज किया है दिस इज टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। वंस वी हैव कंप्यूटेड L पावर m when we are given L power m-1 and W, and then we computed the sequence of all these matrices यानी कि L1, L2, L3। इसके लिए हमने एक और आउटसाइड पे एक लूप चलाया फॉर I इक्वल 1 2 3 अप टू जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस थे। तो लिहाजा आपके पास जो फाइनल एल्गोरिथम है उसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट विल बिकम ऑफ ऑर्डर 4। बट इन दिस केस वी डिड नॉट केयर अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम बिकॉज इट इज पॉसिबल टू मेक मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच। उसकी रीजनिंग जो है वो बहुत सिंपल है, because our objective is to find L power n-1 and L power n-1 is of course equal to W power n-1. So how to compute W power n-1 efficiently, this is the topic of our next lecture. आइए देखते हैं स्लाइड को। Now running time of previous algorithm is very high and needs improvement. Of course उसकी जो total cost है वो हमने of order V4 निकाली है। The goal is not to compute L power m matrices but only computation of a matrix L power n-1 is of interest. As matrix multiplication is associative, therefore L power n-1 can be calculated with only log of n-1 matrix products S। यानी कि यहाँ पे आप देखें L power 1 is equal to W, L power 2 is equal to W square, L power 4 is equal to W4 which is W square into W square, and W power 8 is equal to W4 into W4। तो लिहाजा फाइनली मेरे पास L की पावर n-1 विल बिकम L की पावर 2 की पावर log of n-1। ये ऑफ कोर्स दोनों इक्वल होते हैं बिकॉज वी नो दैट द एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो दैट्स व्हाई L पावर n-1 इज इक्वल टू L स्क्वायर पावर log of n-1 इज इक्वल टू W पावर 2 पावर log of n-1। तो एज यू हैव सीन इन दिस स्लाइड, यहाँ पे मैंने जिक्र किया कि आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू कंप्यूट L पावर 1, L पावर 2, L पावर 3, but in fact our objective is to find L power n-1, and we know that L power 1 is equal to W, so that's why L power 2 will become W square and so on.
So once we have computed, for example, L square, which is equal to W square, and we are going to compute the W power 4, then we do not need to compute the W3. Simply we can multiply W square by W square, it will give us W power 4. And when we have computed W power 4, then we do not need to compute W power 5, W power 6, W power 7. Directly we can compute W power 8. So it means if we are given, for example, n as 100, then n minus 1 will become 99. If our total number of vertices are n, जिसको मैंने अभी 100 कहा, then our objective is to compute L power 99. So to compute the matrix L power 99, simply first we will compute W square, then we will multiply W square with W square, it will give us W power 4. When we have computed W power 4, then we will multiply W power 4 by W power 4, and it will give us W power 8. Once we have computed W power 8, we can compute just in one multiplication W power 16, and similarly we will continue this process, and you will see that it is possible that we can compute W power 99 in the order of log n minus 1. So this is the improvement which we have made in this algorithm. Now let us design a new algorithm which we are calling efficient algorithm using this approach. आइए देखते हैं next slide. So here you can see I have given the name as faster all pairs shortest paths. इसकी input हमने of course capital W ली. हमारे पास n is equal to rows of W. L1 को हमने initialize कर लिया equal to W. M को हमने initialize कर लिया as a 1, and then we have made a loop while m is less than n minus 1. इस तरह से हमने L की पावर 2m कंप्यूट किया यूजिंग द प्रीवियस एल्गोरिथम एक्सटेंड शॉर्टेस्ट पाथ्स. इसकी इनपुट हमने L पावर m और L पावर m ली, और फाइनली हमने m को 2m से रिप्लेस कर दिया, और फिर हमने जाके चेक किया इफ़ 2m यानी कि जो अब आपके पास m बन गया है, इफ़ दिस इज लेस देन n माइनस 1, अगेन यू विल कंप्यूट L पावर 2m, एंड ऑफ कोर्स यू विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस until we get the m is greater than n minus 1, and finally we will be returned with the L power m. So in this case, as we made the analysis before, that if we have to compute L power n minus 1, यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ही L power n minus 1 है और हमारे पास इनिशियली L power 1 और W जो हैं वो गिवन है, जो कि हमने कहा हुआ है कि L power 1 is equal to W है, तो आपने यहाँ पे देखा कि it was possible to find the L power n minus 1 in the order of log n minus 1. So in this way, as you can see that we have improved the algorithm by order of log n minus 1. तो लिहाजा पहले हमारे पास इसी एल्गोरिथम का, जिसको मैंने स्लो एल्गोरिथम कहा, उसकी टोटल कंप्यूटेशन कॉस्ट वाज ऑफ ऑर्डर n4, बट नाउ दिस हैज बीन रिड्यूस्ड टू n क्यूब इनटू log ऑफ n, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ. लिहाजा अगर मैं टोटल कंप्यूटेशनल कॉस्ट ऑफ दिस एल्गोरिथम को वर्टिसेस की फॉर्म में लिखूं तो इट विल बिकम ऑफ ऑर्डर v क्यूब इनटू log ऑफ v. आज के लेक्चर में हमने इनिशियली ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया. हमने कहा कि इफ़ वी आर गिवन ए वेटेड ग्राफ G विच इज़ ऑफ कोर्स डायरेक्टेड, देन आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ वर्टिसेस. इसकी हमने इनपुट डिज़ाइन की. इनपुट के लिए हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है उसको यूज़ किया फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ. उसकी हमने रीजनिंग भी दी कि हमने इसको क्यों यूज़ किया है, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द आउटपुट ऑफ द ग्राफ, यानी कि आपकी आउटपुट ऑफ दिस ग्राफ जो है वो किस तरह की होनी चाहिए. एंड देन वी ऑब्जर्व्ड दैट सिंस वी रिक्वायर शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, तो इसके लिए हमने एक नोटेशन यूज़ की LIJ, जिसको हमने कहा था कि दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स VI टू वर्टेक्स VJ या वर्टेक्स I टू वर्टेक्स J, because we know the value of I is in between 1 to n, and of course value of J is also in between 1 to n, so that's why we require total n square number of such computation. इसके लिए हमने मैट्रिक्स को यूज़ किया फॉर स्टोरिंग द आउटपुट ऑफ द ग्राफ, जिसको हमने कहा कि लेट सपोज दैट कैपिटल L बी ए मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज जो हैं वो LIJ हैं, एंड I रिप्रेजेंट एनी ऑफ द वर्टेक्स I, एंड J रिप्रेजेंट एनी ऑफ द वर्टेक्स J, एंड LIJ रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स I टू वर्टेक्स J. इसके लिए हमने जो अपना फर्स्ट वन एल्गोरिथम डिज़ाइन किया, दैट वाज वेरी सिमिलर टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम. हमने उसको देखा कि इफ़ फॉर एग्जांपल वी गिव L पावर m माइनस 1 एंड W हमारा वेटेड फंक्शन है, और L जो है दिस इज़ आवर बेस केस, जिसको हमने इनफैक्ट
अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया था. इफ वी गिव बोथ ऑफ दीज इनपुट्स एंड वी कंप्यूट द आउटपुट, इट विल बी l पावर m. जब हमने उनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम की और दिस वन आवर फर्स्ट वन एल्गोरिथम जिसको हमने रीयूज किया है, इनकी आपस में मैपिंग डिफाइन की बाय असाइनिंग सम ऑपरेटर्स एंड फॉर एग्जांपल जिसमें हमने मिनिमम को प्लस कहा और प्लस को हमने मल्टीप्लिकेशन कहा, और सिमिलरली अपने एल्गोरिथम में हमने कैपिटल L को वहाँ पे A कह दिया, फिर हमने W को कैपिटल B कह दिया और अपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स L डैश को हमने यहाँ पे C कह दिया. तो वी ऑब्जर्व दैट बोथ ऑफ दिस मैट्रिक्स जो हैं वो सिमिलर हो गए, because we know that the computational cost of the multiplication of two matrices is n cube, so that's why the cost of that matrix will also be of order n cube. Because our objective was not only to find the value of l power m, our objective was to find l power n minus 1. So computing l power n minus 1, we require l power n minus 2, we require l power n minus 3, and so on. So that's why we started from the base case and we designed an other loop outside of our algorithm, and for using that loop we computed a sequence of matrices l power 1, l power 2, l power 3 and up to l power n minus 1. L power n minus 1 was our final matrix which represents the shortest path in between any two pair of the vertices. But we also observed that since our objective is to find the value of l power n minus 1, so that's why we can compute this matrix more efficiently. For this purpose we improved our algorithm, and finally you observed that the total computational cost of this algorithm was v cube into log of v. This is all about for the today lecture. इसी के साथ डॉक्टर जफर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.